Good morning, children. In our last class, we have read chapter number 4, that is A Tiger in the House. I hope you have read this chapter and understand the story behind it. And I already have given homework of difficult words. I hope you have write down difficult words in your notebook number 1. If it's not done, then first of all write down difficult words, then word meanings. I'm going to explain meanings of difficult words. Let us start. First word is expedition. EXX paddy PEDA paddition. TION expedition. It means a journey undertaken with a definite objective. A journey undertaken with a definite objective. कि किसी ऑब्जेक्टिव को लेके हम कोई जर्नी करें उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन. सेकंड इज पर PER पर SU ADED persuaded. It means to convince, or as this word is in second form, so we will write its meaning in second form also. Convinced, CONVIN, convinced, CED, convinced. Persuaded means convinced. Third is accompany, 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 to go with as a companion, कि कंपेनियन की फॉर्म में जाना, किसी का साथी बनके. फोर्थ इज सम्प, SUMP, सम, TUTUOUS, us, sumptuous. It means great. Next is entire, 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 LY, entirely, means completely. Next is TREAT, treat, retreat, means going backward. Next is ready, RIDI, ready, QCULOUSLY, ridiculously. It means laughable. Next is crafty, 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 look, LOOK, it means deceptive, DECEPTIVE, deceptive look, different look. Next is snarling, SNAR, snarling, LING, snarling, to grow, threateningly. Pro, pro, PHETIC, prophetic, means predicting, के एक्सपेक्ट करना, के प्रिडिक्ट करना, कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, उस वे में. फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है कि जैसे बारिश की प्रेडिक्शन है वेदर की, कि बारिश होगी या नहीं होगी. प्रोफेटिक इज इन द सेम वे, मीन्स प्रेडिक्टिंग. फ्रेंजाइड, FREN, फ्रेंजाइड, ZIED, it means wild. Next is villain, 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 OUS, villainous. Intent means wicked intention, बुरा इरादा. Next is relish, RELISH, relishness, NESS, relishness, means liking. Next is scorn, SCORN, scornful, scornful means full of disrespect, right? Now next we have some extra word meanings. First is how,
HOW how, DAHS does, how does, how क्या होते हैं? A seat for riding on the back of camel or an elephant, के जैसे कैमल और एलिफेंट की बैक पे जो सीट होती है उस पर बैठ के राइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड हाउ डज. नेक्स्ट इज एंट्री, INTRI, इंट्रीकेट, CATE, इंट्रीकेट होता है कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट इज कंपेनियन, COMP, companions, ANIONS, कंपेनियंस होते हैं अ पर्सन दैट कंपनीज अनदर, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कंपनी दे, दैट इज कॉल्ड कंपेनियंस, किसी के साथी. नेक्स्ट इज कम, COM, पार्ट, PART, पार्ट, MENT, मेंट, कंपार्टमेंट, इट मीन्स सेक्शन. जैसे ट्रेन के होते हैं कि हमने ये कंपार्टमेंट में बैठे हैं, थर्ड कंपार्टमेंट, फोर्थ कंपार्टमेंट, that is section. Next is bars, BARS. Bars means a long rigid piece of metal or wood, metal या wood का बहुत solid सा piece उसको. Next is reunion, REUNION, union. Reunion means the act of uniting again, किसी का दोबारा से इकट्ठा होना उसको बोलते हैं रीयूनियन, राइट. आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट इज एक्सपेडिशन, मीन्स अ जर्नी अंडरटेकन विद अ डेफिनिट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड, परसुएडेड, मीन्स कन्विंस्ड. थर्ड, अ कंपनी, मीन्स टू गो विद एज अ कंपेनियन. Fourth is sumptuous, means great. Fifth is entirely, means completely. Sixth is retreat, means going backward. Seventh is ridiculously, means laughable. Eighth is crafty look, means deceptive. Next is snarling, to growl threateningly. 10th is prophetic, predicting. Next is 11th, frenzied, means wild. 12th is villainous intent, wicked intention. 13th is relishness, it means liking. 14th is scornful, means full of disrespect. Next 15th, how does, means a seat for riding on the back of camel. 16th is intricate, means complex. 17th is companions, means a person that accompanies another. 18th is compartment, means section. 19th is bars, means a long rigid piece of metal or wood. 20th is reunion, means the act of uniting again. Clear? So learn how to spell these words and meanings, right? Now students, open your books on page number 37, back exercise of chapter number 4. First of all, mention date and day on question number 2. Second question पे आप date और day mention करेंगे. Then we will do. Statement is identify the speaker of the following lines. ये lines given है 5 आपको, and you have to judge the speaker of these lines कि ये lines किसने बोली है. First is when he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. ये कौन बोल रहे हैं कि जब वो, ये कौन बोल रहा है कि जब वो अपनी चेन को पुल करता है, चेन पुल कौन करता था? टिमोथी. और पुल करता है तो उसको उसके साथ
चलना डिफिकल्ट हो जाता है। कौन बोलता है? द ऑथर। स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज द ऑथर, AUTHOR, right? Next is, one of these days we are going to find Timothy sitting on महमूद's bed. ये कौन बोल रहा था कि जो टिमोथी है महमूद के बेड पे बैठना शुरू हो रहा है? Who said this line? Grandmother. Grandmother said this line. Next C part is, why don't you put him somewhere else? ये कौन बोल रहा है कि आप इसको किसी और प्लेस पे क्यों नहीं रख देते? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कब ये लाइंस बोली थी? जब टिमोथी को एक और लेपर्ड तंग कर रहा था। डी इज, आई हैवंट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, कि मैं बहुत समय से यहाँ पे नहीं था। कौन बोल रहा है ये? फर्स्ट कीपर ऑफ द जू। फर्स्ट कीपर, जो कीपर सबसे पहले ग्रैंडफादर को मिलता है, दैट इज फर्स्ट कीपर। फर्स्ट कीपर ऑफ द जू। नेक्स्ट ई पार्ट, आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, ही डाइड 2 months ago। ये कौन बोल रहा है कि मुझे याद है आपका टाइगर बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है 2 months पहले ही। हु सेड दीज लाइन्स? द सेकेंड कीपर ऑफ द जू। सेकेंड कीपर ऑफ द जू, राइट? Clear? Next is third question. Choose the correct answer from the options given. We have three options of each question, so we have to choose right option. A part is, the tiger cub was named Timothy by, कि टाइगर कब को टिमोथी नेम किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन द ग्रैंडफादर, सेकेंड ऑप्शन द ग्रैंडमदर, and the third option is the author. किसने दिया था? द ग्रैंडफादर. Its answer is part A, Timothy. Next B, महमूद was, महमूद कौन था? फर्स्ट ऑप्शन अ शिकारी, सेकेंड अ राइटर, थर्ड अ कुक. He was a cook of grandfather. So Mahmood was a cook. C part, initially था पहले. Timothy was quite scared of. टिमोथी को किससे डर लगता था? द पप्पी, द मंकी, द कुक. सबसे पहले उसको किससे डर लगता था? पप्पी से. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज डी पार्ट, द प्लेस वेयर टिमोथी वॉज, लेटर होता है बाद में, शिफ्टेड टू वॉज, वो प्लेस क्या थी, कौन सी थी जहाँ पे टिमोथी को शिफ्ट किया गया बाद में? द तेराई जंगल्स, होम, थर्ड इज अ जू इन लखनऊ. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, अ जू इन लखनऊ, के टिमोथी को बाद में लखनऊ के जू में रखा गया, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव टेस्ट योर ग्रामर on page number 39. Here are some animal based idioms. These are idioms. Match them with their meanings. Animal names are used in these idioms: cock, bull, cat, pigeon, bat or worms, right? Now we will match these idioms. First is cock and bull story. Cock and bull story होती है कौन सी? वो स्टोरी, वो झूठ होता है जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते. We have 2 columns here. Under first column we have cock and bull story, second cat among the pigeons, third blind as a bat, fourth can of worms. Under column B we have, first is
To be in total darkness and unable to see anything at all. Second, to be outstanding or the best in its class. Third, truth which is ugly and hidden. Fourth, a lie which is completely unbelievable. So first is cock and bull story. ये वो स्टोरी होती है, वो झूठ होता है जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते. So fourth option is will go with A part, a lie, वो झूठ which is completely unbelievable, जिस पे believe नहीं किया जा सकता, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं cock and bull story. So it will go with part 4. Second, cat among the pigeons, के pigeons के बीच में cat हो. It will go with second part, to be outstanding or the best in its class. कोई चीज़ बहुत अच्छी होनी, उसके लिए यूज करते हैं cat among the pigeons. C is blind as a bat. Bat means जो चमगादड़ होती है बैट. Blind as a bat, उसकी तरह ब्लाइंड होना, कि कुछ दिखाई ना देना. It will go with first part, to be in total darkness, कि पूरे अंधेरे में रहना, and unable to see anything at all. It will go blind means जिसको दिखाई नहीं देता. At bat क्या है? Blind means one who can't see, and bat means animal who lives in bat, a bird who lives in darkness. So it will go with first part, to be in total darkness and unable to see anything at all. D part, can of worms. Worms, do you know worms? Can of worms, बहुत ज़्यादा worms होने, तो it will go with truth which is ugly and hidden, वो सच्चाई जो अगली हो, गंदी हो, और ugly is an opposite word of beautiful. beautiful का opposite word है ugly, and hidden वो सच्चाई जो अगली हो और छुपी हुई हो. Clear? So cock and bull story will go with a lie which is completely unbelievable. Second, cat among the pigeons will go with to be outstanding or the best in its class. C, blind as a bat means to be in total darkness and unable to see anything at all. Fourth is can of worms, means truth which is ugly and hidden. Right? So today we will do this back exercise up to C part. Right? So write down difficult words if not done and word meanings in your notebook number 1, and do back exercise in your book on page number 37 and 39. Also learn this back exercise. Right? Thank you.